Good morning, all of you. Merry Christmas and an advance New Year. Yes, please, can I get some wishes with reciprocity? Darshan, Rohit, Aragya, Smriti. Yeah. So, belated Merry Christmas and an advance Happy New Year to all of you. Whenever this new year comes, many of us tend to have a lot of hope and aspiration that 2026 shall be a great year for us. Whatever we could not achieve in 2025 would be achieved in 2026, and maybe with a positive surprise, with an outlier on the upside, with a positive skewness. Okay, if we speak more statistical language, I hope that happens with you. The country that we are in is offering us great opportunity. And in this great opportunity space, if somebody is constrained in aspiring a mediocrity, that would not be good. So let me set the stage right away. I am assuming that this particular session is being attended only by those who want a very, very high aspiring life. I repeat, I'm not going to talk mediocrity. I'm going to talk in terms of very, very high aspirations. I could have named the session in a different manner, focusing only on MBA or focusing on careers in finance. I did not. We named the session CFA versus MBA, and I will do justice to the topic by speaking about the same. You must have heard that there are lies, there are damned lies, and there is statistics. ये phrase बोला जाता है कि when you pick up statistical data, although that is used for data analysis, but statistical data is something which could be really played with for the purpose of coming out with the wrong narrative altogether. Therefore, I have always believed in my life that I will pay attention more to anecdotal evidence, as in people who around me are doing what and what not. Now, please understand there was a period 2015 to 2018. Yes, 2015 to 2018, especially Calcutta, to some extent, even outside Calcutta. What was happening over there is that students of BCom, students of BBA, students of Eco Honors, students of Stats Honors, they started doing the CFA program right from the first year onwards. BCom, BBA, Stats Honors, Eco Honors, they all started doing the CFA program from the first year onwards. Yes. And in fact, they completed their CFA by the time they were in the third year. Yes, they did. We have empirical evidence. And these people were picked up by JP Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bain Capital, McKinsey. And they spent around 2 years over there. And after spending 2 years over there, some of them went ahead to do MBA, say at ISB. Others, they felt that MBA would be a great opportunity cost. And they stayed in their organization because ultimately, what would MBA offer? Networking and placement, correct? And if you are getting both the stuff in your present organization, why would you offer 2 years of your precious life in taking a break and going for it? So I think that this sets the stage for me to show two case studies with you. I'll not invest too much time over there, but I will be showing two case studies with you. Let me. So one case study is that of Isha Duggar. I met her around a year ago in Bangalore. Coincidentally, she was getting married, and I recognized her from her face because that time it used to be a much cozier environment in which we used to study. So she is a student who studied BCom. Let me take you to the education section. Yeah. So St. Xavier's College, Kolkata, 2015 to 2018, she did her BCom. After doing her BCom in the third year itself, she joined JP Morgan
as a junior analyst. You can see 2018 to 2022 years, 20 to 21, 9 months. So 2 years, 9 months at JP Morgan. She then went ahead to pursue MBA at ISB, June 21 to May 22. She completed her CFA in December 22. Okay, she got a charter in December 22, which means after WorkX, which means she completed her CFA in 2018 and then 19, 20, 21, the 3 years WorkX, and she was issued the CFA charter in 2022. You can see that. She also joined Bain and Company, and presently she is working in a particular startup in Bangalore. Okay, Wari, that's the startup, Bangalore, Karnataka. 1 year, 5 months. This is her profile on LinkedIn. I spoke to her, in fact, day before yesterday to see if she could come in and pitch her experience over here. But unfortunately, she was traveling. This time is actually the time where people travel. In fact, I am traveling from the 1st of Jan. So was not available to join this one. Otherwise, it would have been superb. I'll definitely request her in some future sessions to join us. So she is like a BCom student from St. Xavier's, Kolkata, completed her CFA, okay, while doing BCom, and then uh, was picked up by JP Morgan, worked over there for 2 years, and then went for ISB MBA. So that's one path where you do your CFA and then you do your a particular job and then you go for MBA. The other is this guy. Now, he is super, super impressive. Raghav Daga. He had made a great name for himself way back in the same period, 2015 to 2018. Raghav Daga. He was doing eco honors from St. Xavier's. While at the same time pursuing his eco honors, he also pursued the CFA and FRM designation both. CFA and FRM both were pursued by him at that time. Now you will also see over here that 2016 to October 16, he did his internship as a credit research analyst at Jet Reality Private Limited. So he's doing this internship while doing CFA and FRM. Once again, you will find that at BMA Wealth Creators, he's pursuing his internship 2016 to 2018, okay, as an equity research analyst. So the best part about the CFA and FRM program is that you are able to do college activities, you are able to participate in fests, you are able to lead those activities at your respective college, you are able to do proper internship because you are able to show that you have cleared level 1, level 2 or whatever. Okay. And at the same time, you are picked up by the likes of JP Morgan. Okay. Look at this thing. He's completed his CFA 2016 to 18. He's completed FRM also. Okay, he also pursued the CFP program after that, which means while in job. Okay, was picked up by JP Morgan and is still working in JP Morgan. Let's look at the total tenure. JP Morgan, 7 years, 6 months. Can you see that? JP Morgan Chase and Company, 7 years, 6 months. So he has been working since then at JP Morgan. He decided not to pursue MBA. He's getting great progress at this organization and therefore sticking over there. Now let me stop share. Whatever doubts you have in between when you are listening to me and you wanted to ask something, there and then only you can please post your doubts on the chat. Okay. My learned team and one of my alumni is sitting for the purpose of answering the doubts. So the doubts can go on parallelly, please. Keep on posting your doubts and the doubts will be replied. So here we have the story of two students who, during their graduation in BCom and Eco Honors respectively, pursued the CFA program, and one of them CFA and FRM program got picked by JP Morgan in the third year of their graduation and then moved ahead. One of them decided to do ISB MBA later on. The other stuck up at JP Morgan. I also happened to speak to a very old student of mine, Sumer Bajaj.
You would like to check in his LinkedIn profile later on. Sumer Bajaj. I spoke to him day before yesterday. Now, why am I taking his name? Because some people would say that, sir, St. Xavier's, SRCC, okay, इन सबके स्टूडेंट्स को ही ये मौका मिल पाता है. ओके, जो सेकंड टियर कॉलेजेस है शायद उनको मौका नहीं मिलता होगा. नाउ सुमेर बजाज is the vice president Morgan Stanley. He's placed in New York. When he was doing graduation, he did with me MS Finance, which was the Indian CFA by ICFI Hyderabad, and pursued FRM simultaneously. And he was doing BCom at Bhawanipur College. He was doing BCom at Bhawanipur College, did his Indian CFA. Okay, that time people used to pursue Indian CFA was there. MS Finance with me and pursued FRM. So if you look at the qualification, these two are the qualifications. And then he moved ahead. Okay, and right now he's the Vice President Morgan Stanley. Okay, in the risk management department and going to become a president in the next, I think, by the 10th of January. So it is wrong if you think about the fact that only if you are from the top-notch colleges, okay, Ashoka or SRCC or St. Xavier's, only then you can lead up to these. Even if you are from a second grade or third grade college, but you have developed the fire in you and you're not reconciling yourself to mediocrity, but having a very, very high aspiration, sky's the limit, believe me. So what I mean to say is that there are three. Usually I feel that one size fits all doesn't work. But over here, I'm telling you that at least this thing is making a perfect sense where you join the CFA program in the first year or second year of your graduation. Maybe an FRM also along with it. You pursue the same, complete 2 levels in the 3 year of your graduation. You are picked up by some startup, by some big firm, by some mediocre firm, and you have an extensive experience of 2 years over there while pursuing your level 3 CFA, because now level 3 cannot be completed prior to graduation. Only 2 levels can be completed up to graduation. So you pursue your third level along with your job, complete the same. FRM would be completed. And once you do that, you have to assess, are you getting adequate network? For example, in a particular place where you are working, you are interacting with the CXO at different organizations. You are getting a healthy package. So the placement part is done. The networking part is happening. Why would you then go for an MBA? You may not. There are many, many students in India who are not going for MBA after getting a beautiful job with a good package and networking, and they're not going for MBA. Others who are not getting that thing, so they are going for an MBA after WorkX. And the third path would be, sir, I pursue the CFA or FRM, whatever, and I straight away sit for the CAT examinations in the third year of my BCom or Eco Honors. In the third year, I'll sit for BCom. I'll straight away, I have a high IQ level, crack 99 percentile or whatever, and get into IIM Bangalore, Ahmedabad. Isn't that a good thing? I think that's not the best thing. I think MBA should definitely gone for only after WorkX. You start your CFA FRM. With the help of that, you get a particular placement, and then you go for an MBA if you feel that the networking or the placement, the package is lacking. Okay, that's the secret of cracking this code. Now, the best part is that along with your CFA or FRM in the college, you can do other activities. You can be a part of clubs, you can be a part of communities, societies, you can show your entrepreneurial and leadership and communication skills as a part of it. Now, this is something that CAs are not able to do. Those who are doing chartered accountancy, as soon as they get into CA intermediate, life becomes a hell for them. They're not able to manage these leadership, communication abilities along with their CA. That is what once again really spoils the personality of a chartered accountant. One who was having a great personality up to class 12, gives his CA foundation, that's fine, gets into CA inter, and then you find that he's really bogged down. He finds that everything of his has been constrained. His sports, his other activities have been constrained. So it's becoming a clear-cut path nowadays. If there is a student who enters into the first year or second year and feels that मेरे को MBA करना है, मैं और कुछ नहीं करूंगा, मैं केवल कॉलेज एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगा, MBA करूंगा, I think that is one more path which can be looked upon.
क्या मैं उस बात के अगेंस्ट में हूं? मैं उसके अगेंस्ट में नहीं हूं। आई थिंक आप ये भी कर सकते हो कि केवल मैं एमबीए के लिए सोचूंगा, आई डू अ लॉट ऑफ इंटर्नशिप दिस एंड दैट, एंड देन आई विल do a work and move towards MBA. I am okay with it. But I think the probability of your getting a good network, a good package, and entry into the best of B schools, it's significantly enhanced if you devote time to the CFA or the FRM program after your class 12. I'm dead sure about it because I've seen examples पे examples. Now the problem is that सिंस 2018 से लेके 2024, 2018 से लेके 2024, there's a gap of 6 years when the CFA Institute did not allow people to pursue their CFA after class 12. Therefore, the recent students could not see immediate experience. अभी जब 2025 में नवंबर में रिजल्ट निकलने वाला है सीएफए लेवल 1 का, नवंबर 25 का जो एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट इज गोइंग टू कम आउट इन जैन, एंड यू विल फाइंड दैट दीज गाइज हु आर क्लियरिंग देयर सीएफए लेवल 1 आर गोइंग टू शेयर immaculate experience regarding what happens to their career. Now it will start happening. So the same ball which was rolling at that time will roll 2024-25 से लेके 2027-28, and once again इस बार रास्ता बनेगा। ठीक है। In fact, CFA Institute had carried out a survey called Impact Analysis. I think 2022 में उन्होंने India Impact Analysis carry out किया था survey. I'll request my other BD and Kavya to share the CFA program impact analysis in which they have empirically shown data as to how CFA program even after level 1 is ensuring that people are able to get jobs, people are able to get internships, okay, of levels somewhere starting from 8 9 lakhs to levels of around 30 lakhs. And those who are getting CFA charter, their median salary is roughly around 40 lakhs. Okay, if I could remember, you please see the thing which is being shared, so you can watch the same over here. In fact, can you see the screen? Is it there? CFA Institute releases survey of impact assessment of CFA program in India. Average annual income increase of 192%. दिख रहा है क्या सबको? Are you able to see this? We are sharing this as a part of the chat. So you can go through the same because this is like data supported, na, empirical evidence, which will show you. So it's a very wrong notion if you fall back and you wait for these 3 years to pass कि 2024 से 27 28 पास होगा एंड एक लाइन क्रिएट होगी लोगों की जिन्होंने करियर बना लिया और तब जाके अपने इस पे आएंगे, बहुत गलत हो जाएगा। ऑफ कोर्स उधर से भी सुधारना पड़ेगा। पीपल स्टार्ट देयर सीएफए आफ्टर एमबीए, जो एमबीए फाइनेंस करने जाते हैं तब उस केस पे सीएफए स्टार्ट करते हैं बिकॉज उनको समझ में आ जाता है कि एमबीए में अगर टॉप क्वार्टाइल में रहना है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट तो इन दैट केस वो जो टी शेप्ड स्किल्स का जो वर्टिकल टी है ना, वो वर्टिकल टी में सीएफए करना जरूरी है। सो दिस इज द इनिशियल क्या बोलते हैं communication from my side, and I will, even though it's a Zoom webinar, but I will allow some people to speak in terms of what they want to ask, although a very elaborate chat is going on side by side. So Kavya, can you manage that some people who want to speak out, if you can unmute them and let them Sure. speak out so that it's interactive? Anyone who wants to ask their questions can please raise their hand. Yes, Dishant. Hello. Hi Dishant, good morning. Yes, good morning, sir. Sir, actually, I did engineering and then I started in finance and I quit my job, engineering job. So अभी मैंने CFA कर रहा हूँ तो और मेरी एज 24 है and currently I am unemployed. So how can I make a way and what would be the correct path? So, Dishant, good morning. Generally speaking, I'm telling you what is the sense of affairs at the entire commerce students domain. We Okay. find that commerce students, uh, they feel that their area of finance is being totally captured by you engineers. Okay, you all come and provide a different perspective altogether, not the debit credit perspective which is there in accountancy. I am so proud of you that you understood your calling, that whatever you were doing as an engineer and the type of work it was,
and the lack of leadership and communication that was happening over there, the back-ended job, and you decided to get into finance. And now there were two stresses that you shared with me right now. One stress was you felt that your age 24, and the second stress was the fact that you're unemployed. So Dishant, Yes. if you look at it from a 1 year, 1 year down the road or 2 year down the road, when you took this decision of moving into finance domain, I think you must have there only understood that मेरे को 2 साल लगेंगे, 2.5 साल लगेंगे CFA क्रैक करने में और फाइनेंस डोमेन में मूव करने में, वो आपने Yes. वहां पे Yes. फिगर आउट कर लिया होगा. बट ये जब आप मूव कर रहे हैं और इतने सारी चीजें हो रही ना, इतने जन का लिंक्डइन प्रोफाइल देखते रहते हैं, इसने ये कर लिया वो कर लिया, तो मन में रोज रोज एक फाइट हो जाती है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. ठीक है. तो मेरे को लगता है कि दिशांत, ये चीज एक पेशेंस की बात है और कैरेक्टर की बात है जो आपको लानी पड़ेगी. आपने कौन सा लेवल सीएफए का कर लिया या देने वाले हो? नवंबर में अटेम्प्ट किया हुआ है सर, मैंने लेवल 1। सीएफए लेवल 1 आपने नवंबर में अटेम्प्ट किया है. तो दिशांत, मेरा यही सुझाव रहेगा, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स योर फैमिली का डिपेंडेंसी ऑन यू एंड अदर थिंग्स, दैट आप आराम से इस नवंबर में, जो नवंबर 26 है, उसमें सीएफए लेवल 2 पे जी जान लगा दो. ठीक है. ओके। इसके साथ साथ आपका लैकिंग क्या है? बिकॉज सीएफए जितना भी बढ़िया से करा रहा है, कोई डाउट नहीं है, पर एट द एंड ऑफ द डे वो एक एकेडमिक प्रोग्राम है. ठीक है ना, जिसमें अपने बहुत अच्छे से पढ़ ले कोई बंदा, तो इन दैट केस वो प्रैक्टिकल के बिना भी पास हो जाएगा. तो वो एक ड्रॉबैक है. अ, मेरा सुझाव रहेगा कि हम लोग अभी 15 जैन को एक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं जिसका पैरेलल इस दुनिया में नहीं है, कॉल्ड द एनालिस्ट स्टैक. ओके. ओके। अगर आप वर्ड ध्यान देंगे, एनालिस्ट स्टैक मतलब एक सुपर्ब एनालिस्ट को एक स्टैक ऑफ स्किल्स चाहिए होते हैं. उसको हर इंडस्ट्री का केपीआई पता होना चाहिए, उसको हर इंडस्ट्री का डायनेमिक्स पता होना चाहिए, उसके पास एक फिलॉसफी होनी चाहिए. ठीक है. और डिग डीप करने का एक माइंडसेट होना चाहिए. और एआई जो आज के दिन है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं जिससे अपने वैसे एनालिसिस नहीं करें जैसे 5 साल पहले, 10 साल पहले लोग करते थे, बट आज के टूल्स को यूज करके कैसे कर सकते हैं. तो मैं ऑल दो क्लास में बहुत कोशिश करता हूं कि मैं प्रैक्टिकल बहुत सारे हिंट दे सकूं, और तब भी अपने क्लास में 600 से ऊपर घंटे लग जाते हैं, आपको पता है. तो यस सर। मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं पूरा यू टर्न करके और एक्स वाई जेड स्टफ करते रहूं. तो दिस एनालिस्ट टैग फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम माय साइड इज गोइंग टू कम, विच विल इंश्योर दैट आपका जैसे ही लेवल 2 होता है और आपका एनालिस्ट टैग हो गया है, कंपनीज वुड बी रीचिंग आउट टू यू. मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं कि एक बार आपने इंटरव्यू दे दिया तो उसके बाद आपको लिया नहीं जाए, ये पॉसिबल नहीं है. यू कांट एक्सपेक्ट द टाइप ऑफ पैकेज यू विल गेट स्ट्रेट अवे आफ्टर लेवल 2. और फिर लेवल 2 के बाद आप लेवल 3 जो है वो जॉब के साथ करोगे. तो आई विल टेल यू टू वेट फॉर दिस ईयर 2026. वेट करो, इस पे टारगेट करो कि मैं सीएफए कर लूं कंप्लीट अपना लेवल 2, और मैं एनालिस्ट टैग कर लूं, तो मैं प्रैक्टिकली भी कैपेबल हो गया और मैं सर्टिफिकेशन वाइज भी कैपेबल हो गया. यस सर। ओके। ठीक है ना. ऑल द बेस्ट. एंड थैंक सर यू. डेरिवेटिव्स में भी एक्सपोजर है। आई थिंक वी हैव मेट इन वडोदरा, इफ यू रिमेम्बर देन। ओ यस यस, आई रिमेम्बर. ठीक है, यस, अभी आई एम याद आ दैट रहा है. गाय। हम्म. ओके। हम्म. ब्यूटीफुल. तो डेरिवेटिव में तो मेरे को याद है आपने क्या क्या बोला था. ठीक है, सोप एक्सपोजर है, तो कुछ पीछे रहने की बात नहीं है. सब चीज सही चल रही है और सही चलेगी. और डेरिवेटिव्स को बहुत ज्यादा माइनस कर दिया गया है करंट इन्वायरमेंट में, जेन स्ट्रीट का एपिसोड वगैरह, बट यू विल यस। फाइंड 1-2 साल में ही दिस एंटायर साइकिल विल टर्न अराउंड, एंड you will be sought after as a person, as a analyst who has so much of deep knowledge in derivatives, so that can also manage the risk management part of it quite well. ओके। Thank you. थैंक यू सर। ओके। Thank you for attending and speaking to us. थैंक Yeah, यू। sure. Yes, Saksham, you have your chance. Yeah, hi, sir. Saksham this side. I don't know if you remember me, but I cleared CFA level 3 this year with you only. So, yeah, I had like one doubt. So basically, I'm currently working as an audit and assurance consultant in Deloitte since like more than 3 years now. Hmm. But I'm like really confused, like whether I should give my GMAT and like finish with my MBA or like go for a job switch in equity research, which is my liking. Like my current job profile is not to my liking, so Ah, I'm just working as is. yeah, So correct. Uh, I have understood the stuff. So, see, experience is definitely counted, and especially working in Deloitte, the experience would always be respected.
but the domain of experience is not something that we aspire for. We don't want to make a career in this domain, because this domain of accounting and auditing has very limited innovativeness, has very limited scalability, has very limited areas wherein we can really scale to the heights that we want to achieve. So your two paths that you are speaking about, sitting for GMAT and then trying that, or going for equity research role. Now I'm clear cut that there are two things that you should do, Saksham. Number one, you should shift to an equity research role. Given that you have cleared your CFA level 3, it would be possible to find an opening. That opening may come at a lower package to begin with. Okay. However, it would be decent enough, but not to your liking. But at least it will be an opening which is worth. Number two, given that you have 3 years of role in auditing and assurance, if your time and your pocket permits, I would advise you to also pursue FRM along with it. Why? Because right now I took the example of Sumer Bajaj. I would advise you to check his LinkedIn profile after the session. And Sumer Bajaj is a guy who did his FRM, did his CFA, and right now he has reached to what heights. So I feel that people who have experience in auditing and assurance, they really are the king of the risk management domain. Now, risk management is number one generic, number two, it is risk management related to investments. So you are a person whom I see really preferred because of the fact that you have this auditing and assurance experience. And if you do an FRM, you have proven the fact that you could be a great risk manager along with an equity analyst. So if your time and purse permits, you should somewhere pull FRM along with your recent stuff and move to the equity research role. Okay, yeah, got it. Thank you, sir. Thank you. Thank you. All the best. Thank you. Yes, Kruti, you have your chance. Smriti, you have to unmute yourself. Sir, am I audible? Yes, yes, you're audible. Good morning. Yes, sir. Sir, मैं अभी एक्सेंचर में हूँ. Like 4 years of experience अभी March 2026 में होने वाला है. I gave one attempt of my CAT अभी 2025 में, but scored only 85 percentile. तो सर अभी थोड़ा कंफ्यूजन है कि मैं CFA के लिए जाऊँ या फिर CAT को और एक अटेम्प्ट दूँ, क्योंकि 4 years होने वाले हैं जॉब एक्सपीरियंस में एंड आई एम 26 right now. Smriti, this is a virtuous cycle when it comes to multiple attempts of CAT, wherein what happens is that एक पर्सन, जैसे मैं आपके शूज में स्टेप इन करके बोल रहा हूँ, मैं ये याद करता हूँ कि जब मैंने कैट दिया था लास्ट ईयर, तो उस केस में शायद मैंने पूरा टाइम नहीं दिया, शायद मैं ऐसे प्रिपेयर करता तो मेरे स्कोर ज़्यादा आ जाते। ठीक है। शायद मेरे को थोड़ी बुक्स रीडिंग करनी पड़ेगी जिससे कि जो इंग्लिश वाला पोर्शन अलग एरिया से उस पर बढ़िया कर पाऊँ, शायद मेरा डीआई वाला पार्ट थोड़ा लिमिटेड था। ये सारे ख्याल आते रहते हैं। एंड इतनी सारी आवाज़ अपने आसपास चल रही है कि लगता है वापस एक बार ट्राई कर लें। मेरे को लगता है ये लो प्रोबेबिलिटी गेम है। अगर लास्ट टाइम 85 आया था, इस बार 90 आ जाता है, तो भी यू लैंड अप टू सर्टेन बी स्कूल्स वेरिन आपका जो प्लेसमेंट होगा और जो नेटवर्किंग होगी, एंड गिवन दैट 2 साल वहाँ चला जाएगा, आई थिंक उससे बेटर अप्रोच हो सकता है अगर आप अपने स्ट्रेंथ्स को समझो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रेन्स। वन ब्रेन इज अ ब्रेन विच हैज़ अ वेरी 360 डिग्री एक्सपोजर। माने चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे नंबर्स हो, लिटरेचर हो, साइकोलॉजी हो, उन सब में अपना बहुत दिमाग चलता है एंड ऑल दैट। मैंने वी आर वेरी लाइट इन टर्म्स ऑफ ऑल दीज, तो सच दैट कैट वगैरह एग्जामिनेशंस में हाई परसेंटाइल इजीली स्कोर हो जाते हैं। द अदर इज अ टाइप ऑफ ब्रेन दैट वी आर वेरी हार्ड वर्किंग, वी आर रियली रियली हैविंग अ गुड एटीट्यूड। हो सकता है एक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, तो हमारा आईक्यू लेवल लेफ्ट साइड में हो सकता है हो, पर हमारा वर्क एथिक्स लेवल जो है राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन में है। मेरे को फर्स्ट फीलिंग आपका ये वाला आ रहा है कि आप बहुत ही मेहनती, बहुत ही करियर कॉन्शियस पर्सन हो, बट आप अपने स्ट्रेंथ पे नहीं और वीकनेस पे हो सकता है खेल रहे हो। मेरा एडवाइस होगा कि आप एक तो सीएफए ज्वाइन कर लो 100%। दूसरा बात है, इनकेस आपको देखना है तो आप एक बार ना ये बैंगलोर पुणे में जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, पुणे में देयर इज अ बैंकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जहाँ पे 2 साल का एमबीए होता है बैंकिंग में। Okay. तो वहां पे एंट्री इजियर है। ठीक है। और वो एक ऐसा, माने हम लोग के लैंग्वेज में एक ऐसा स्टॉक है जो कि अंडर प्राइस्ड है। ओके, पर लोग उसको पिकअप नहीं कर रहे हैं। ओके, बिकॉज ऑफ अदर नॉइजेस विच आर देयर। तो आप पुणे इंस्टीट्यूट में जो बैंकिंग रिस्क मैनेजमेंट है, वो वाला एमबीए की तरफ देखो। उसके लिए क्या कट ऑफ होता है एक बार स्टडी करना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। एंड आप एक बार सीएफए स्टार्ट करके
एक साल वेट करके जब आपका लेवल 1 हो जाए तो वो वाले में अप्लाई करने का सोचना। मैं एक साल क्यों वेट करने बोल रहा हूँ, बिकॉज सीएफए में जो स्किल्स चाहिए ना पास करने में लेवल 1, उससे आपका बहुत सारा शार्पनिंग हो जाएगा ब्रेन्स का। ओके, जो मेरे ख्याल से सफिशियंट होगा फॉर यू टू गेट इन टू दैट, तो यू कैन देन मूव ओवर देयर। लेवल 2 वहां से आपका परस्यू होते गया, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जब तक आपका एमबीए कंप्लीट होगा वहां से, एंड आपका सीएफए कंप्लीट होगा, मे बी एफआरएम भी बाद में, तो आप बड़े इजीली प्लेस्ड हो जाओगे एट अ वेरी गुड पैकेज at a particular bank in the credit risk department or market risk department or operational risk department. ये सर एक्चुअली वही डाउट रह रहा था सर, क्योंकि 4 इयर्स जॉब एक्सपीरियंस हो गया है, एंड उसमें कैट में ये अटेम्प्ट गया, फिर अगले बार करना है उसका नहीं नहीं, अनसर्टेनिटी। वो और तो सर मैं मैंने कह मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, कई सारे स्टूडेंट्स को जो लोग कैट का मल्टीपल अटेम्प्ट्स देते हैं, और वही चीज होता रहता है। बिलीव मी, आप क्या होगा ना, फिर आपको खुद को अपने आप पे भरोसा हट जाएगा, आप खुद जी अपने सर, आप को। अभी तो एक्चुअली वही हो रहा है, क्योंकि अभी सर ऐसा लगा कि इतना मेहनत किया और 85 ही आया। तो सीएफए में मैं तो केमिस्ट्री बैकग्राउंड से हूँ, आईटी में जॉब कर रही हूँ, तो हम्म, कैसे ही कर पाऊंगी सीएफए, तो और ज्यादा ये नहीं तो करना ये बता पड़ेगा दूं, मेहनत करने को। सर मैं मैं ऐसा नहीं समझ हूँ, गया, बट मैं समझ गया स्मृति, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि सीएफए का जो फुल इमर्जन वाला प्रोग्राम है मेरा, ठीक है, उसमें आवर्स तो ज़्यादा लगते हैं, कोई डाउट नहीं है, बट उसमें आप कर नहीं पाओ ऐसा इम्पॉसिबल है इस दुनिया में। मैंने आई कांट टेल यू मैंने कैसे एक्सप्लेन किया है, कैसे समझाया है, जिस तरीके से, मतलब कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद बोलते हैं इसी का इंतजार था लाइफ में। ठीक है, आई कैन गारंटी यू दैट मच। कुछ एक वीडियोस है जो आपसे शेयर कर लेते हैं, आप वो 2-4 वीडियोस देख लो यूट्यूब के। मैं बढ़िया बढ़िया वीडियो शेयर करता हूँ काव्या, या सर। कुछ कुछ वीडियोस जो है मैं बताऊंगा कंपनी हम्म। एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट के, ओके वगैरह। हम्म। वो आप शेयर करना स्मृति के साथ। लेट हर टेक हर टाइम अंडरस्टैंड कि वो समझ पा रही है क्या, ठीक है, एंड हम्म। देन वी परहैप्स गिव हर द कॉन्फिडेंस। बट स्मृति, आप ओके। वापस से कैट के चक्कर में मत पड़ना, अभी मत पड़ना, और एक साल अपने यहीं पे खड़े रहेंगे नेक्स्ट ईयर, एंड यू विल बी ऑन द सेम स्टेटस को व्हेन इट कुड हैपन। जी सर, वही वीसीएस साइकिल एकदम चलता रहता है कि अभी फिर और एक अटेम्प्ट दे दूं, क्या क्या करना है, वही सर डाउट था। अभी तो सर मैं अभी यूट्यूब में आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं वो हम्म, वाले स्टार्ट किया है मैंने देखना, थोड़ा हम्म, 2 लेक्चर ही मैंने कंप्लीट किया है अभी। हम्म। यूट्यूब से सर थोड़ा कंटिन्यू कर रही हूँ बहुत आपके बढ़िया। लेक्चर से। और 1-2 लेक्चर में भेजता हूँ, पहले वो देखिएगा। बिकॉज क्या होता है ना, बिल्डिंग ब्लॉक तो बिल्डिंग ब्लॉक ही है, अच्छा ही है, वो आपका बन रहा है बिकॉज केमिस्ट्री ऑनर्स के है, बट एक जोश भी आना चाहिए पढ़ने में। तो वो जो जोश है ना, वैसा 1-2 लेक्चर होगा जिससे आपको समझ में आएगा कि यार ये तो इक्विटी मार्केट है, ये तो डेरिवेटिव मार्केट है, ये तो स्टेटिस्टिक्स है, और ये पूरा समझ में आ रहा है, खोल खोल के सर बता रहे हैं, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके श्योर सर, और एक थैंक यू बार सर। पूरे इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को चेक कर लीजिएगा फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। या ओके श्योर सर। जी, श्योर श्योर। थैंक यू सर। हाँ, सी व्हाट आई कैन सी इज दैट मेरे अगल बगल में देर आर 2 पीपल हु आर कंटिन्यूअसली रिप्लाइंग टू द डाउट्स जो कि थ्रो हो रहे हैं वहां पे, क्या नाम है आप लोग के, तो इट्स दैट अपने ऑडियो वाइज तो उतने लोग से ही सुन पाएंगे ना, मतलब पर आप अगर चैट बॉक्स पे अपने डाउट डाल रहे हैं तो उसका तेजी से रिप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो प्लीज वो डालते रहिए। काव्या, प्लीज लेट्स गो टू द नेक्स्ट पर्सन। Yes, Rohit, you have your chance. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। It's a pleasure talking to you. सेम। So, I'm your current student. I have joined you. I got to know about SSEI in last December, and I have joined level 1 with you. I just cleared my level 1 in the August attempt, and now I've been joined in level 2 as well with you. Sir, I am currently in my fourth year of undergrad college. I am in Michigan in USA, and I am pursuing double bachelors in accounting and economics. So, now I'm about to enter into my last semester, like eighth semester, and I will graduate in May. Sir, I'm very confused because, honestly talking about in academic wise, in last 4 years of my college, I didn't learn that much what I have got to learn with you in FSA, economics, and all other sections while learning on level 1. Now I'm just confused about should I apply for the further educations like master in finance, master in data science, because I still feel I always feel I know so less and my education is not that good. But I'm planning to join analyst tag on the day one. I'm learning Python alongside. I don't know like on what role should I apply. There are a lot of questions in my mind and I'm too conscious about what I know. So Rohit, first of all, what time is it in Michigan right now? Sir, it is as same as New York.
It is 12:37 a.m. right Okay. now. So thanks a lot for the respect and love that you have shown. Okay. At this time of the hour. And congratulations that you cleared level one in your first attempt. And Thank you, sir. you know how passionate I am right now about starting this batch of level two as soon as the results of these guys are out. Okay, who have Right. appeared in November. Matlab, I'm just holding back to the extent of my potential to just explode into level two. And this will further take you up as far as your intellectual ability is concerned. Thank you, sir. सेकेंडली रोहित, काफी बार क्या होता है कि इतने सारे लोग अपने आसपास रहते हैं अपने खुद के एज के, एट द सेम टाइम अपने से 1 साल 2 साल सीनियर, और Right. ये लिंक्डइन में ये यहाँ पे ये पोस्ट आता रहता है, लिंक्डइन में ही अपने प्रोफाइल्स पे चल जाते हैं, तो जाके अपने को एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि हम क्या Right. कर रहे हैं यार, ये बंदा तो क्या कर लिया। Correct. दैट इज नॉट द वे इन विच यू असेस योर सेल्फ। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि देर आर टू डिस्ट्रीब्यूशन, और आप तो डिस्ट्रीब्यूशन समझोगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा। Yes, sir. वन इज आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन एंड द अदर इज वर्क एथिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। For sure. बहुत जन ऐसे हैं जिनको लगेगा कि मेरा आईक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, आई एम बीइंग वेरी वेरी जेन्युइन अबाउट इट। बट उनका वर्क एथिक्स, मेहनत का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें वो लोग बोलेंगे मेरा राइट साइड में है। एंड मेरे ख्याल से ये सफिशियंट है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए। मतलब Right. every person who has achieved something and whom you are seeing at LinkedIn or something, it should be an inspiration for you। ठीक है, कि ये पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने सुमेर का 2 बार नाम ले लिया, क्यों? बिकॉज वो बंदा, गॉड, मेरे पास कैलकाटा में पढ़ता था ना, मैं कैसे समझाऊं, ही वॉज सो, मतलब ही वॉज सो हम्बल। एंड यू कुड नेवर से दैट सर इसमें क्या स्पार्क है इस बंदे में, नेवर एवर। बट यू वुड सी दैट ये सिंसियर है, क्लासेस अटेंड करता है, ओके, टेस्ट देता है, मॉक टेस्ट देता है, पास होता है एक बार में मेहनत करके। ठीक है, भवानीपुर में सिंस एडमिशन हुआ, इसका मतलब द पर्सन डिड नॉट गेट अ वेरी हाई स्कोर क्लास 12, ये क्लास 12 के बाद नहीं आया था, बट अभी मेहनत कर रहा है, अपना फ्यूचर बनाना चाहता है, अपना फेथ है उसका। ठीक है, सालासर वगैरह में जाता रहता है, वट एवर इट इज। सो आई मीन टू से इज दैट ना, लाइफ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है जहां पे केवल हाई आईक्यू वालों को रिवॉर्ड नहीं मिलता है। ठीक है, बट दिस आई एम सेइंग नॉट दैट आपका आईक्यू लो है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट सिंस आप ऐसा सोचते हो ना, आई डोंट नो टू मच दिस और दैट, तो इसलिए बोल रहा हूँ। सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन, सी, वहां सिटिंग ओवर देयर एट मिशिगन, the possibilities are much much better as compared to what are there sitting in India over here, because India में इवन डर भी लगता है कि ये ख्वाब देखे क्या। ओके, मिशिगन में वहां पे लगता है इनेबलमेंट है। तो मैं बोलूंगा कि आप प्लसेस को देखो rather than माइनसेस के बजाय। आपने जो मास्टर्स का नाम लिया, तो मास्टर्स आप डेटा साइंस में करोगे या मास्टर्स आप कौन से फील्ड में करोगे? जैसे मास्टर्स इन फाइनेंस तो मेरे ख्याल से एकदम भी नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि सीएफए में जो तीनों लेवल में पढ़ोगे वो मास्टर्स इन फाइनेंस के एकदम सुपर पावर होगा। तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डूइंग मास्टर्स इन फाइनेंस। नाउ सिंस यू आर डूइंग पाइथन एंड ऑल दैट, वुड यू डू मास्टर्स इन डेटा साइंस? मेरे को सही लग रहा है कि मास्टर्स इन डेटा साइंस सही रहेगा आपके लिए। बट एट द सेम टाइम लेट मी टेल यू, वी वोंट लाइक यू टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट। डेटा साइंटिस्ट हमें नहीं बनना है, क्योंकि डेटा Okay. साइंटिस्ट का जॉब जो है ना, वो पीछे का जॉब है, बैक एंडेड जॉब है। ठीक है, डेटा साइंस जानना है इसलिए कि हम लोग ऊपर के लेवल पे आके डेटा साइंटिस्ट लोग से काम करा सके। ठीक है, तो सो द मास्टर्स इन डेटा साइंस इज ओके विथ यू, बट एट द सेम टाइम जो अपने सीएफए में लर्न कर रहे हैं उसके हेल्प से अगर इक्विटी रिसर्च में एज अ जूनियर एनालिस्ट का एंट्री मिल सकता है वहां पे किसी बढ़िया फर्म में जहां अच्छा काम होता है, मे बी किसी हेज फंड में, मे बी किसी माने क्या बोलते हैं लॉन्ग ओनली फंड में, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। Okay, दैट वुड बी sir. रियली गुड। Okay. Okay. Perfect, sir. But sir, yesterday I was seeing a profile of this guy called, क्या नाम है उनका, सौरभ कुमार। लिंक्डइन में आप देखिएगा, सौरभ BH कुमार, okay. साइंटिफिक इन्वेस्टिंग करके ये कुछ चला रहे हैं। ठीक है, एंड दिस गाय वाज एन इंजीनियर, went into Okay. data scientist 2018 या समथिंग में, एंड ही हैज डन सो मच। इट्स सच एन इंस्पिरेशन कि आप क्या क्या कर सकते हो इन योर फील्ड। ठीक है, सो इट्स जस्ट, आपका एज क्या है रोहित? मेरे ख्याल से 20 या 21 होगा। Sir, 22, and it feels like I'm already 50 40। in terms of like it feels too late. या सो डोंट डू दैट प्लीज। मतलब 22 का एज इज अ वेरी वेरी गुड एज, where you are feeling so much of pressure, that goes to show how much fire you have in your
हार्ट एंड अपने अभी एनालिस्ट टैग जो स्टार्ट करेंगे, जो अनाउंस होगा 15 जन को, मैंने आई एम गारंटिंग यू वो आपके पूरे के पूरे जो ये जो बिलीफ है ना आप में कि आपको कितना कम आता है, वो सारे चीज को चेंज कर देगा इन 6 मंथ्स टाइम। जहाँ पे इस साल के एंड में आपका जब लेवल 2 हो चुका होगा एंड एनालिस्ट टैग कर लिया होगा, यू विल फील लाइक सर वो फीलिंग जो थी ना उस समय उस दिन आपके सेशन में, वो फीलिंग अब नहीं है सर। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जानना बाकी है पर बहुत कुछ जानता हूँ सच दैट मैं रियली आगे बढ़ के compete कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, also just one more question. Like it was, I remember I was introduced with your videos while I was in my second year, like around at the end of the second year, and at that time मुझे इतना समझ में आ गया था, I want to finance from my college because you will teach me enough finance. Then the possible major was I switched into accounting because I thought मैं फाइनेंस आपसे सीख रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ यूटिलाइज कर लूँ ताकि मेरे पैसे वेस्ट ना हो जाए। आई डोंट वांट टू लर्न द सेम स्टफ इन बोथ ऑफ द एरियाज, बिकॉज मैंने यहाँ से अकाउंटिंग भी लिया हुआ है। आई थॉट टू एनरोल इन CPA एज वेल एंड आई स्टार्टेड माई प्रेप। नाउ आई एम वेरी कंफ्यूज एंड एवरीवन आस्क मी व्हाई आर यू डूइंग बोथ CPA and CFA? In your opinion, does it make sense to pursue both of the certification, and does it help at any stage in finance career? It Because I wonderfully don't want help. to make. Yeah, it wonderfully helps. You search for people with a CPA and CFA combination profile search करना, and you will Mhm. find that those are coveted people. मतलब इतना ज़्यादा डिमांड है ना, कोई लिमिट नहीं है उसका। ठीक है। और गिवन दैट मैं थोड़ा सा बने जब इतना बात कर रहा था, मे बी आई वेंट मोर इनटू द इमोशनल साइड ऑफ इट rather देन फोकसिंग ऑन द फैक्ट दैट यू सेड दैट यू आर डूइंग इट इन अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो नो मैटर व्हाट पीपल से, मैंने आई हैव वेरी क्लोजली ऑब्जर्व्ड CPA का जो करिकुलम है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो राइटअप है उसके अंदर इतने बढ़िया से वो जेल करता है कि मैंने CFA को कंप्लीट करता है। एंड मैं तो पुराने जितने वेबिनार्स थे उनमें हमेशा बोलता था ओके स्टूडेंट्स Yes. को। ठीक है। मैंने आई Yes. यूज टू से, आजकल मैं कम बोलना चालू कर दिया बिकॉज दैट्स नॉट माय फील्ड। तो मेरे को लगता है कि शायद लिसनर्स हु अटेंड टू मी आर नॉट रेडी टू डाइजेस्ट दैट मच ऑफ इट, बट आप डेफिनेटली कीजिएगा, एकदम सही है आपका। ठीक है। आप CPA कीजिएगा एंड आपको डिफरेंस पाएंगे 2 साल बाद कि आप कहाँ पहुंच जाओगे। 100%। Sir, thank you so much for answering my questions. श्योर I'm so श्योर। excited to talk to you, and I'll see you in level 2 and in Yeah, I analyst think test. yeah, I think yesterday morning I was जो अपना shocked. सुबह yesterday morning when there was a session ना on CFA level 2 के बारे में, कल सुबह जो Yes. सेशन था उसमें somebody was messaging from Michigan। ठीक है। तो मैं I was नाम तो नहीं I, देख, I was the same guy, sir. या एंड आई वाज नॉट एबल टू सी द नेम एंड ऑल। ठीक है। बट अच्छा है चलो कि टुडे वी आर एबल टू टॉक एंड विल बी एसोसिएटेड। Sir, माय डॉटर, congratulations for your daughter as well. Yeah. या माय डॉटर इज डूइंग एट कॉर्नेल। वो तो खैर अभी 3rd सेमेस्टर में गई है और वेव थियरी ये सब उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट ही नहीं है। बट यू गाइस हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। ओके। मतलब कई कई बार हम लोग यहाँ पे बैठ के सोचते नहीं नहीं हमारा सब बढ़िया चल रहा है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम ग्रेट है, बट हम लोग को भी लूप होल्स पता है। तो जिनके पास अपॉर्चुनिटी है दे शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड वी यू यू आर सपोज टू मेक वी इंडियंस प्राउड सिटिंग ओवर हियर। ओके। Thank you, sir. थैंक यू। She has a tremendous profile. I'm so glad, like the way you instruct and mentor to everybody. You have actually helped me to discover my passion and build my understanding. आपने जैसे FSC and economics पढ़ाया था CFA level में, it is unparalleled, sir. It is थैंक यू। unparalleled. आई एम गोइंग टू कम टू US इन द मंथ ऑफ May एंड आई कीप अ नोट दैट मेरे को रोहित को एक बार कांटेक्ट करना है कि मिलना पॉसिबल है क्या, कहाँ कहाँ जाएंगे US पे, वो तो ध्यान नहीं है बट मे बी। ठीक है ना। I'll come anywhere, sir. श्योर Thank you so much. श्योर। थैंक यू। बाय बाय। Bye. So, see, there were around 4 discussions and once again पता नहीं मैं कितना लकी होता हूँ कि कभी भी मोनोटोनस डिस्कशन नहीं होता है। द डिस्कशंस वे टोटली डिफरेंट। दिशांत वाज एन इंजीनियर हु हैज just appeared for level 1 and all. ठीक है। We had a chemistry on a student who has 4 years of work at Accenture. ठीक है। Another student who has completed CFA level 3, Saksham Bajaj, now thinking about his career. Now we have a student from Michigan who has completed CFA level 1 and level 2 के अंदर जा रहे हैं and all that stuff. So, man, if this is not a diversified exposure, then what else is? Okay. So my Sunday has been made as a result of this beautiful session. I don't know about you all कि आप लोग का संडे ये जो 45 मिनट्स मैंने आपका
क्या बोलते हैं, आपके लाइफ से ले लिया है, ये वर्थवाइल था कि नहीं था, बट मेरे लिए तो वर्थवाइल था. आई एम रियली हैप्पी एंड ऑल द बेस्ट टू यू, ऑल माई ब्लेसिंग्स टू यू. Looking forward for a great year 2026 at my table, in which CFA level 2 is a top agenda for me and analyst track is the topmost agenda for me. We are going to really rock analyst track. Okay, let it be announced on 15th of Jan, and we will just show how practical stuff is done in real life, not the garbage in, garbage out stuff that's often shrouded in LinkedIn when people share models after models whatsoever. Thanks a lot for attending. All my love for you, and once again, wishes for a happy new year. Thank you.